Good morning, everyone. Today we'll discuss reproduction in Vaucheria. In this topic, we'll discuss about various methods by which this Vaucheria reproduces. So, firstly, it reproduces by vegetative reproduction. Then it reproduces by asexual reproduction. Asexual reproduction में ये special structures बनाता है, which depends upon the environmental conditions. So first is zoospores. These are motile spores which are formed under favorable conditions. Then next is Aplanospores, which are formed under tough environmental conditions. Akinetes, these are again formed under tough environmental conditions. These are thick walled cells. Then next is sexual reproduction. So sexual reproduction in case of Vaucheria is highly advanced type. So it is mainly oogamous type. So we will discuss about its reproductive structure, that is Antheridia and Oogonia. Then we will discuss about fertilization and finally the germination of Oospore. So let's start. So reproduction is a process by which a species is continued. So first method of reproduction is vegetative reproduction. So in vegetative reproduction, any vegetative part can give rise to full individual. So it occurs by the method of fragmentation. So this is the vaucherial thallus. So any part of this thallus or fragment can give rise to new vaucherial thallus. So this fragmentation may be due to mechanical injury or by some insect bite. So fragmentation. So thallus can break into small fragments due to mechanical injury and by insect bites. So each this fragment has the capability to give rise to new vaucherial thallus. So this broken fragment develops thick wall and give rise to vaucherial thallus. So this is the method of fragmentation. The next is asexual reproduction in Vaucheria. So asexual reproduction involves a single parent. So the offsprings formed are exact carbon copies of their parents. So we can call them as clones also. They show less genetic diversity. So the first structures by which this reproduction occurs are zoospores. So these zoospores are the motile structure. It means they will bear some sort of flagella that helps in locomotion, and these structures are formed under favorable conditions. So what happens, any part of the filament will contain large number of nuclei and chromatophores, और ये जो structure है these structures moves towards one end, जिससे कि यहाँ पे एक lobose structure बन जाता है इसकी तरह, and after that there is a partition with the help of septum. So septa are formed only at the time of reproduction, means formation of some sex organs or this zoosporangium, or at the time of some injuries. So this whole structure which is inside this club-shaped structure gets converted into this structure which is the zoospore. So this is a complex type of zoospore in Vaucheria, which is commonly known as syn zoospore. So this is a most common method of reproduction in case of aquatic species, and this takes place under favorable environment when conditions are optimum, means the availability of food, water and light is sufficient. Then this alga reproduces by the formation of zoospores. So these structures are formed within elongated club-shaped structure which is known as zoosporangium. So this structure is known as zoosporangium. So this zoosporangium will give rise to a single zoospore. So the development of zoospore, this zoosporangium, begins with a club-shaped swelling at the tip of one side of branch. So we can see here this is the tip of branch. So the material which is present inside the filament that moves towards one end and give rise to this swollen structure or club-shaped structure which is known as zoosporangium. So जो ये swollen structure बनता कैसे है, जो भी
न्यूक्लियाई हैं और क्रोमेटोफोर्स हैं along with cytoplasm that moves towards that end of branch, जो ये ब्रांच का एंड है इसकी तरफ मूव करते हैं. सो ड्यू टू दिस प्रेशर exerted by this movement of this cytoplasm, chromatophore and number of nuclei, it give rise to this swollen structure. So inside this zoosporangium, जो zoosporangium है इसके अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है. The number of vacuoles decreases inside the zoosporangium, and the content of जो इसके अंदर का जो content है that becomes dense, and finally it rounds off. So this is the structure of zoosporangium. Then the main step is initially जो normal filament होता है उसमें जो chromatophores हैं, these are the pigments जो कलर इम्पार्ट करते हैं वॉचेरिया के थैलस को, इनकी जो पोजीशन होती है दैट इज टूवर्ड्स पेरिफेरल रीजन, एंड द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इनर टू द क्रोमेटोफोर्स. बट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस zoospore, we can see in this picture, this is the TS of normal filament and this is the TS of zoospore. So zoospore जब बनता है, so ये जो पोजीशन है that becomes reversed, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. सो जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, एंड जो न्यूक्लियाई है दैट कम्स टूवर्ड्स पेरिफेरल साइड, और हर एक न्यूक्लियस से दो दो फ्लैजेला राइज होंगे, एंड दैट गिव राइज टू दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर which is known as syn zoospore. So the change takes place in the relative position of nuclei and chromatophores. So nuclei becomes peripheral. In normal filament they are inner to the chromatophores, but ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस zoospore जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जो क्रोमेटोफोर्स हैं दे एंटर टू द इनर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर. देन जो भी पूरा का पूरा कंटेंट है zoosporangium के अंदर वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं zoospore. So this oval structure is known as zoospore. Then opposite to each nucleus, जो न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, हर एक न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे दो दो फ्लैजेला अराइज होते हैं. It gives rise to two flagellas and making the zoospore multiflagellate. So ये जो zoospore है ये होता है multiflagellate structure. So इसमें बहुत सारे flagella present होते हैं. So this is the complex type of zoospore. Then finally in this zoosporangium इसमें टर्मिनल पोजीशन पे एक अपर्चर और पोर डेवलप होता है जिसके थ्रू ये zoospore बाहर निकलता है, and the zoospore is liberated through this aperture, especially in the morning hours. Next is zoospore. So this zoospore is a oval rounded yellowish structure which is a multiflagellate structure. So it is a large yellow green oval structure. In this picture we can see here, this is the structure of this zoospore. So Frisch was a scientist. He regarded this type of zoospore as compound zoospores, और इसको कहा था उन्होंने syn zoospore. So this is very important. Syn means fused zoospore. So बहुत सारे zoospore के fusion से जो complex structure बनता है that is syn zoospore. So that's why this is considered as compound zoospore, as a number of biflagellate zoospores fail to separate from one another. So we can see here this portion with two flagella is considered as a single zoospore, but ये जो zoospores हैं separate नहीं हो पाते हैं, they stay together and they form a single complex structure which is known as zoospore or compound zoospore or syn zoospore. So that's why the zoospore of Vaucheria is considered as a compound zoospore or syn zoospore. Then this zoospore, after its liberation from zoosporangium, swims freely in the water और germinate करता है immediately. And this germination will give rise to this tubular growth. So tube की तरह growth इस
zoospore से निकलती है, that give rise to, and then finally the Vaucheria thallus. The next structure which is formed during asexual reproduction is Aplanospore. So Aplanospores are non-motile spores जिनके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है that helps in locomotion. सो एप्लानोस्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाएगा एप्लानोस्पोरेंजियम. सो इसमें भी सिमिलरली ये बनता कब है, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं. सो दीज स्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. सो सिमिलरली इसमें भी जो एक वॉचरियल ब्रांच है उसमें सारा का सारा जो सेल का कंटेंट है दैट गेट्स शिफ्टेड अलॉन्ग विद न्यूक्लियाई, क्रोमेटोफोर्स और साइटोप्लाज्म, give rise to this club shaped structure जिसको बोलते हैं Aplanosporangium. Then there is a formation of this septa, और सेप्टा बनने के बाद ही इसमें पार्टीशन हो जाती है एंड जो इसके अंदर का जो सारा का सारा कंटेंट है वो राउंड ऑफ हो जाता है टू फॉर्म द सिंगल Aplanospore. So it is observed in some species of Vaucheria like Germinata and in Pitoboloides. So ये कुछ एक स्पीशीज़ हैं Vaucheria के जिसमें Aplanospores ऑब्जर्व किए गए हैं. मोस्टली ये बनते हैं टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में, मीन्स दो स्पीशीज़ विच आर प्रेजेंट ऑन द लैंड सरफेस. इसमें ये जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन. और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एप्लानोस्पोरेंजिया. एंड जैसे ज़ूस्पोर बनता है दे आर आल्सो प्रोड्यूस सिंगली इनसाइड दिस ज़ूस्पोरेंजियम. द टर्मिनल ब्रांच, जो टर्मिनल ब्रांच है उसमें ये स्ट्रक्चर बनता है और इसके अंदर का जो सारा का सारा कंटेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सिंगल एप्लानोस्पोर में. एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एप्लानोस्पोरेंजियम गेट्स मेटामॉर्फोस्ड इनटू अ सिंगल and multinucleate spore which is non-motile and it is known as Aplanospore. Aplanospores की जो cell wall है that is also thick because it has to overcome the tough environmental conditions. So जैसे ही Aplanospores liberate होते हैं Aplanosporangium से, जैसे ही बाहर निकलते हैं this structure will settle down, ये कहीं सबस्ट्रेटम के ऊपर सेटल डाउन होगा और जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म द न्यू वॉचरियल थैलस. Then the next asexual structure formed during tough environmental conditions are akinetes. So these are thick walled structure which are formed under unfavorable conditions like drought and low temperature. So this is the picture. In this picture we can see here, इसमें भी क्या होता है, जो वॉचरियल ब्रांच है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है अलॉन्ग विद न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स वो मूव करता है ब्रांचेस में, लेटरल ब्रांचेस की तरफ. एंड दिस मूवमेंट इज फॉलोड बाय सक्सेसिव डिवीजन. सक्सेसिव डिवीजन हो जाती है दैट गिव राइज टू दिस स्मॉल सेगमेंट्स जो कि थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं. एंड दी स्मॉल सेगमेंट्स आर नोन एज एकाइनेट्स और हिप्नोस्पोर्स. और हिप्नोस्पोर्स के अंदर बनते हैं these thin-walled structures which are known as cyst, and these cysts will give rise to the new vaucheral thalli. So these are the thick-walled structures which are formed during unfavorable conditions like drought and low temperature. Drought is a condition जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, नेचुरल रेनफॉल, so that leads to dryness in the land or environment. That condition is known as drought. Then जो ये structures बनते हैं they are formed on terminal part of lateral branches where protoplasm migrates, and this migration is followed by cross wall formation. तो उसमें साथ साथ में septa बनते हैं that results in formation of these small segments, और इन segments को कहा जाता है akinetes. So these multinucleate thick walled segments are known as akinetes, और hypnospores भी कहा जाता है. So hypnospores are the thick walled resting spores which are produced under unfavorable conditions. Then जो ये successive division है that may form numerous thin walled bodies which are known as cyst.
सो इसके अंदर बनता है small thin walled structures like this one, and these structures are known as cyst, and this cyst has capacity to give rise to new filaments in vauchereal thallus जब conditions favorable हो जाती हैं. So this successive division give rise to this structure, जो ये structure है, and this structure resembles to one alga which is known as Gongrosira. So this resemblance shown by Vaucheria to the other algae which is Gongrosira. So this stage is known as Gongrosira stage in case of Vaucheria. So thallus gives the appearance of another alga which is known as Gongrosira. Hence this stage of Vaucheria is known as Gongrosira stage. जैसे ही conditions normal हो जाएंगी, so इसके अंदर से जो cyst like structures हैं, they develops into the new thalli. So these are the various structures which are formed during asexual reproduction. Next is sexual reproduction in case of Vaucheria. So sexual reproduction is a biparental process which involves two parents, and it also brings genetic variations. So Vaucheria show most advanced type of sexual reproduction, that is oogamous type of reproduction. Then most of the species of Vaucheria are homothallic. It means that male and female reproductive structures are present on the same thallus. Species are Germinata and Terrestris. So in this picture we can see here, this is the female reproductive structure, that is Oogonia, and this is the male reproductive structure, that is Antheridia, which are born on the same filament. But there are some species which are heterothallic. It means these structures are present on different filaments. For example, species is Vaucheria litoria. Then in some species the sex organs are sessile. Sessile means stalkless. So this is a stalk-like structure which bears this swollen structure, that is this Oogonia. But there are some structures which lacks this stalk-like structure. So जिसमें ये stalk absent होता है, like here we can see here there is stalk-like structure, small एक stem की तरह structure है एक, इस structure को कहा जाता है, इसको हम बोलेंगे stalked structure. Those structure which are without this stalk-like structure are known as sessile. So species is Vaucheria sessilis. इसके अलावा there are some species which are born on short or long stalks. We can see here these are short stalks. Next is male reproductive structure, that is Antheridium. So Antheridium is a tubular structure, cylindrical shaped structure or hook-like structure. इसके अलावा जो एक important point है, जो Antheridia की development होती है Vaucheria के केस में, that is earlier as compared to the Oogonium. So Antheridia पहले बनते हैं, Antheridia बनने के बाद Oogonium की development start होती है. So mature Antheridium is stalk present होती है, cylindrical है, tubular है और hook की तरह इसकी shape होती है. This is the picture of this Antheridia. And next point, जो development है Antheridium की वो पहले start हो जाती है as compared to the development of Oogonium. अगर हम इसके structure की बात करें, Antheridium के structure की, so it is a club shaped structure. It is produced at the apex of short branches. जो Vaucheria के thallus की short branches हैं उनके tips में produce होते हैं Antheridia, और इसमें बनता है एक septum like this which separates the Antheridium from rest of the filament. जो Antheridium है इसको separate करता है rest of the filament से. Then जो protoplast है Antheridia के अंदर means जो भी content है इस Antheridial cell या Antheridial filament के अंदर वो divide हो जाता है small pieces में और बनाता है uninucleate parts. means जितने nuclei हैं हर एक nuclei को सराउंड करता है साइटोप्लाज्म, और वो जो न्यूक्लियाई हैं दे विल फॉर्म, न्यूक्लियाई के चारों तरफ जब साइटोप्लाज्म उसको राउंड ऑफ कर देगा, सो दैट विल गिव राइज टू दिस यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. और ये जो यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स हैं दे विल बियर टू lateral flagella and becomes antherozoid. So like this is the structure
of this uninucleate structure. Antheridia के अंदर ऐसा uninucleate structure है, and this is the lateral side that will give rise to the two flagella. So इस तरह के दो flagella बनेंगे, and this structure is the antherozoid or male gamete. And the flagella जो होते हैं इसमें they are of unequal size, means कि एक थोड़ा लंबा होगा और एक का साइज थोड़ा छोटा होगा. They are laterally inserted, means lateral position में present होते हैं, and pointed in opposite direction. एक इस direction में है, दूसरा दूसरी direction में. An apical pore is developed at the tip of antheridium. So antheridium के टिप में एक पोर की तरह स्ट्रक्चर बनता है जिसके थ्रू ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं बाहर आते हैं, लिबरेट होते हैं. The next is Oogonia. So Oogonia is a female reproductive structure. So it is a club-shaped structure, globose structure. So ये जो structures हैं they are produced near Antheridia. Antheridia के पास बनते हैं, एक ही filament में बनते हैं, और जो development है Oogonia की वो बाद में start होती है as compared to Antheridium. So Antheridia की development पहले होती है और उसके बाद Oogonium बनता है. So in this picture we can see here, ये है एंथ्रीडियल ब्रांच. एंथ्रीडिया बनने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया. तो जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो इसके अंदर मूव करेगा एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लोबोज स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ओगोनिया. सो एक बल्ज, एक आउटग्रोथ से स्टार्ट होती है इन द फिलामेंट विच इज़ नियर टू दिस एंथ्रीडियल ब्रांच. देन अ लार्ज मास ऑफ साइटोप्लाज्म विद मैनी न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर्स विल मूव इनटू इट. तो न्यूक्लियस है, या इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर जो भी सेल का कंटेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स हैं और साइटोप्लाज्म है. इस बल्ज जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मूव करते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस सेप्टा, और एक सेप्टा बन जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस एपिकल swollen structure which is a globose shaped structure. So septum इसको कट ऑफ कर देगा मेन ब्रांच से, और ओगोनियम स्वेल हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल दैट इज न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स और साइटोप्लाज्म, एंड बिकम्स globose. So this multinucleate protoplast of Oogonium is changed into single egg or oosphere. So egg is also known as oosphere, while zygote is a diploid structure which is known as oospore. So इसके अंदर जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस हैं, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं दे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड. सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके अंदर फाइनली, एंड इट विल एक्ट एज एन एग. So only one nucleus is left and all other nuclei are disgenerated or disintegrated. Then again a small pore is produced in the wall of Oogonium. एक छोटा सा पोर बनता है Oogonium में, और उस पोर का काम है एंथीरोजॉइड्स की एंट्री को अलाउ करना. सो यहाँ से एंथीरोजॉइड इसके अंदर आएंगे एंड दिस बहुत सारे एंथीरोजॉइड में से सिर्फ एक ही एंथीरोजॉइड इसके साथ फ्यूज़ करेगा एंड विल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज zygote और oospore. The next important event is fertilization. It involves fusion of male and female gametes. So जो पोर है ओगोनियम के ऊपर, उसके थ्रू बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स एंटर करते हैं इसके अंदर, बट ओनली वन एंथीरोजॉइड विल फ्यूजेस विद द एग. बट फ्यूजन से पहले जो मेल न्यूक्लियाई है, मेल गैमेट का न्यूक्लियाई है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज गेट्स इंक्रीज हो जाता है, एंड आफ्टर दैट it involves fusion of male and female nuclei that results in the formation of oospore or zygote. So fertilization, it involves many antherozoids जो कि enter करते हैं ओगोनियम के अंदर through its pore, but only one antherozoid will fuses with the oosphere, that is egg. egg के साथ सिर्फ एक ही gamete fuse करता है, male gamete, और जो साइज़ है मेल न्यूक्लियस का वो इंक्रीज़ हो जाता है बिफोर फ्यूजन से पहले जो साइज़ है दैट गेट्स इंक्रीज्ड. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज oospore.
और zygote ये secrete करता है अपने बाहर thick walls and then finally it is known as oospore. The next is germination of oospore. So firstly जो thick wall है, thick wall तभी बनती है जब इसने थोड़ी सी environmental conditions को tolerate करना है and it will undergo the period of rest. It means कि जैसे ही oospore बनता है वो immediately germinate नहीं करेगा to form thallus. Then it helps in preventing the unfavorable conditions and oospore germinate and produces new filament directly. जैसे ही ये oospore बनता है इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है that undergo meiotic division. Meiosis होती है that results in formation of haploid structure, haploid nuclei, और ये जो haploid nuclei है germinate करते हैं to form this structure that is the main filament. So first division, जो first division है zygote के बनने के बाद जब germinate करता है that is meiotic, and this meiotic division results in haploid nuclei, and after that it will germinate to form this mature full-fledged thallus of Vaucheria, and thus the haploid number is restored. जैसे start हुआ था haploid number से वही number फिर restore हो जाता है. So this is the life cycle, a brief picture which shows the life cycle of this Vaucheria. So it's जो Vaucheria है ये रिप्रोड्यूस करता है asexually by formation of this structure which is known as zoospore. zoospore बनता है zoospore एंजियम के अंदर. ये zoospore थोड़े से period of rest में जाता है and after that will germinate to form this young filament. It gets mature to form the mature filament. In case of sexual reproduction, जो sexual reproduction है इसमें जो filament है that is homothallic, means male or female reproductive structure एक ही thallus में present होते हैं. जो मेल reproductive structure that will produce antherozoid, और जो female reproductive structure है that will produces egg. दोनों fuse करते हैं to form this diploid structure that is oospore, and जो oospore बनता है that undergoes a period of rest. rest के period के बाद इसका जो nucleus है that shows this meiosis, that is reductional division, and after that it will germinate to form this mature young filament which is haploid. This is haploid because meiosis यहाँ पे हो गई है, so this is haploid and give rise to the young filament. So this is all about the life cycle of this Vaucheria. So again, the life cycle of Vaucheria is haplontic type. It means most of the phase is haploid, but only zygote represents the diploid. So this is all about today's discussion. Thank you. Have a great day.